Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So today in this video we are going to have discussion on MCQs, that is multiple choice questions related to subject of Mohammedan law. See, this is very much important that you people have studied chapters. अगर आप लोगों ने chapter पढ़ लिया है, that is well and good. Let's have डिस्कशन टुडे ऑन एमसीक्यूज जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, आप लोग मुझे बताना आंसर्स. राइट योर आंसर्स बिलो इन द कमेंट बॉक्स simultaneously as you are watching this video. These MCQs are important और जब अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है then you can easily tell the answers of these MCQs or try to read chapters as well. Now, dealing with before let me deal with this question number one, I would like to tell you people that already related to Hindu laws I have covered up the video. You people can check out below in the description or in the I button above. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को भी. Now see what is the question number one. What it says. Question number one is that on the ground of fosterage, Muslim marriage is. On the ground of fosterage, Muslim marriage is. Option A, void. Option B, valid. Option C, irregular. Or option D, muta marriage. What it is? किसके ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज के ग्राउंड पे मुस्लिम मैरिज क्या होती है? क्या वो वैलिड होती है, क्या वो वॉइड होती है, या इरेगुलर, या फिर मुता मैरिज? See what is the correct option. Tell me below in the comment box. So correct answer is, I can't hear you but I can tell you the correct answer. The correct answer is void. On the ground of fosterage, Muslim marriage is, it is void marriage. See, in both according to Sunni law as well as Shia law, on the ground of fosterage, Muslim marriage is said to be void one. ठीक है, it is the ground of void marriage. कौन सा ground है ये? It is a ground for void marriage. Okay, so this one is important. All schools of Sunnis and Shias argue that prohibited relationship arises on the basis of fosterage also. So fosterage is the ground for void marriage. Void marriage को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम वैलिड मैरिज को सही निकाह कहते हैं, void मैरिज को हम कौन सा निकाह कहते हैं? It is the बातिल. And irregular one, what we say? That is fasid. आपको पता है ये? If you know, that is very good. If you don't know, then study it also. क्या हम void marriage को क्या, what is the second name? Options can be what in the see option A पे void के बदले it can also be batil. So batil means what? It is void. Valid, it means सही निकाह. Another irregular one I said right now, उसको हम क्या बोलते हैं according to Mohammedan law? फासिद. तो हम वो भी ऑप्शन हो सकता है. Don't get confused. You should know that. Did you know the difference between void marriage, valid marriage, irregular marriage? If you don't know, tell me below in the comment box. According to Muslim law, tell me. मुता मैरिज, you know, it is only कहाँ पे होती है ये? शियाज में या सुन्नी में? मुता मैरिज शियाज में है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. इट विल बी ए ब्रॉड डिस्टिंक्शन है इन सब के बीच में. यू शुड नो दैट. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ? इनमें से कौन सा सोर्स है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लॉ का? ऑप्शन ए कुरान, ऑफ कोर्स. ऑप्शन बी इजमा. Yes. Option C, Qiyas. It can be Qiyas. Spelling you can see different books में different तरीके से दी गई है. Qiyas, Qiyas. ये क्या ऑप्शन है?
D, one is all of the above. So what is the correct answer? Which of the following are the sources of Muslim law? So primary और secondary sources we have. So इनमें से कौन सा है? All of the above. Which option is the correct? D. Because कुरान भी source है, इजमा भी है, आपका कियास भी है, तो option D is the correct answer. D. All of the above. ठीक है? Now see question number 3. What it says? It says that which one of the following is not essential for a valid marriage under Muslim law? इनमें से कौन सा essential नहीं है valid marriage का under the Muslim law? Option A, offer and acceptance. Option B, competent parties. Option C, fosterage. Option D, free consent. बताइए, what is the correct answer? Tell me. Oh, I can't hear, I can't see you people. So tell me what is the correct answer. Is it A, offer and acceptance? या B, competent parties? C, fosterage. D, free consent. इनमें से कौन सा essential नहीं है valid marriage का? Question क्या है? Not. Look at this. Which of the following is not essential for a valid marriage? So correct option is what? Correct option is for an acceptance या competent parties या फिर free consent. See, these are the essentials for a valid marriage. Valid marriage के essentials है ये. Offer and acceptance होना चाहिए मुस्लिम लॉ में. एक पार्टी क्या देगी? ऑफर देगी and another party has to accept ijab and कबूल. We say right offer. So offer को हम ijab कहते हैं, acceptance को कबूल. So ये होना तो जरूरी है. So this is the essential of a valid Muslim marriage. Competent parties. Yes, parties must be competent to marriage. D is what is the option says? It says that free consent. Definitely. Section 14 of what? Indian Contract Act 1872. 13 के अंदर consent defined है, 14 के अंदर free consent बोला गया है. Consent is said to be free. When? When it is free from coercion, undue influence, misrepresentation, आपका mistake, etc. फ्रॉड नहीं है वहां पे तो फ्री कंसेंट होगा. अगर फ्रॉड है, कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री. कोअर्जन से शादी कर रहे हो, मैरिज इज नॉट सेट टू बी फ्री फ्रॉम द मतलब कंसेंट इज नॉट देयर, कंसेंट इज नॉट फ्री. सो दीज आर असेंशियल. सेक्शन 14 इज इंपॉर्टेंट, राइट? वो पता होना जरूरी है. तो एक वैलिड मैरिज के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है. ऑप्शन सी, fosterage. Right now only we have discussed that in all schools of Shias and Sunnis argue that prohibited relationship arises on the basis of fosterage also. So fosterage is the ground of void marriage. So fosterage void marriage का ground है. It is not the ground for a valid marriage. मतलब essential condition नहीं है valid marriage का. So which option is the correct? Option C is the correct answer. Fosterage. It is not essential for a valid marriage under Muslim law. एक सही निकाह के लिए it is not a essential condition. Now, another question what it says. It says that dower in Muslim law is option A, dowry. Option B, an obligation imposed upon the husband as a mark of respect for wife. Option C, consideration for marriage. Option D, a legal right of the wife. Tell what is the correct answer of this question. डावर मुस्लिम लॉ के अंदर क्या वो एक डाउरी है या एक ऑब्लिगेशन है जो इम्पोज की गई है, इम्पोज्ड है अपॉन द हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वाइफ, या ऑप्शन सी कंसिडरेशन फॉर मैरिज, या ऑप्शन डी अ लीगल राइट ऑफ द वाइफ. सो इसमें ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है? टेल मी कौन कौन से ऑप्शन इज करेक्ट है. सी, डावर इन मुस्लिम लॉ is said to be as a token for मतलब एक token of respect है, ठीक है. It is marked as a respect for wife. It is an obligation which is imposed upon the husband.
ठीक है, it is a consideration for marriage. It is a legal right of the wife to have the dower. So which of the following options among A, B, C, D are the correct? इसमें बताओ कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? टेल मी. A, B, C, D. कौन कौन से ऑप्शन इनमें से करेक्ट है? टेल. इधर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट और इसमें से कौन कौन से करेक्ट है? The correct options are B, C and D. ठीक है, so dower is not dowry, it is an obligation upon the husband as a mark of respect for wife. C, and it is a consideration for marriage and it is the legal right of the wife. So B, C and D, these three are the correct option. B, C, D, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. BB, CB and DB. Got it? Now another question. What it says? Under the Sharia law, if the husband has the capacity to speak but announces talaq in writing, the talaq is what? कौन से लॉ के अंदर? शिया लॉ के अंदर बात कर रहे हैं. इफ हस्बैंड के पास कैपेसिटी है कि वो बोल सकता है, बट ही अनाउंसेस द तलाक इन राइटिंग, वो लिखकर तलाक बोल देता है, क्या वो तलाक क्या होगा? ऑप्शन ए सेज दैट वेदर इट इज वैलिड, ऑप्शन बी void, ऑप्शन सी voidable, ऑप्शन डी valid barring certain circumstances. So which option is the correct? Tell, according to Mohammedan law, which is the correct option here? शिया लॉ की बात कर रहा है. कौन से लॉ की? शिया लॉ की के अंदर अगर हस्बैंड के पास कैपेसिटी है दैट ही कैन स्पीक बट ही इज स्पीकिंग द तलाक इन राइटिंग, वेदर द तलाक इज अ वॉइड वन, वैलिड वन या वॉइडेबल या फिर वैलिड बारिंग सर्टेन सर्कमस्टांसेस. सी, शिया school tells about divorce that talaq must be pronounced orally and the words of Arabic language to be used. शिया लॉ के स्कूल शिया लॉ बोलता है कि तलाक जो है इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली एंड द वर्ड्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज हैज टू बी यूज्ड. ऑन द अदर हैंड सुन्नी लॉ स्कूल आप लोगों ने पढ़ा है तो वो क्या बोलता है? तलाक कैन बी गिवन ओरली एंड इन राइटिंग. राइटिंग की क्या कंडीशन है देखो आप जाकर, ठीक है, उसकी भी कंडीशन अलग है. तो यहाँ पे शिया लॉ की हम बात कर रहे हैं, क्या बोला? तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड orally or Arabic language has to be used while pronouncing the talaq. Now here husband was having the capacity to speak but he pronounced the talaq in writing. क्या वो तलाक वैलिड है या void है, voidable है? What correct? सामने सामने option B is the correct answer because reason I have already given you right now. So B is the correct answer over here. ठीक है, this one was very easy. You should know how to answer the question. Reason you should know. Now this question is for you people. You answer me this particular question. That a Muslim goes to any country of the world. Option A, with his personal law. Option B, without his personal law. Option C, leaving his personal law in his country. Option D, with an object of obeying the laws of the country concerned, which includes personal law. So which is the correct option here? एक मुस्लिम किसी और कंट्री पे जाता है, किसी भी कंट्री पे, सपोज किसी और भी क्या, किसी भी कंट्री पे जाता है वर्ल्ड की, वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? With his, whether he goes with his personal law, without his personal law. Option C, leaving his personal law in his country. Option D, with an option of object of obeying the laws of the country concerned, which includes personal law.
So tell me, you people, below in the comment box which is the correct answer. यहाँ पे correct option कौन सा है? Below in the comment box. So these were the 14 questions जो बहुत important है, आप लोगों को पता होना चाहिए. If you people have any doubt, tell me. And if you want कि मुस्लिम लॉ के ऊपर I should upload videos, ये भी मुझे बताओ. And if you have already studied, very good. अगर कोई डाउट है तो बताइए. And do like and subscribe my YouTube channel for more videos. And thank you so much. आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में और वीडियोस भी देख सकते हैं और सब्जेक्ट्स की. ठीक है, and thank you.